Good afternoon, Sachin. Good afternoon, everyone. So I hope I'm audible to you all and the screen is also properly visible. Please let me know in the chat section that everything is fine so that I can start with the session. Okay. So is everything fine? Please let me know. Okay. Good afternoon, Aditya. Good afternoon, voice of Swara. I think I'm audible, right? Yes. Thank you. Thank you so much. So students, today we will be covering next topic. Next, I would say very important topic, that is seed and sowing, right? This is also very important topic for your NABARD Grade A examination because multiple questions have been asked, and I would say for past 2 to 3 years, 1 to 2 questions are there always in your phase 1 from this particular topic. So we'll discuss this topic through questions and we'll see what are those important topics that you need to learn, right? Okay, before I start, I would like to tell you about our 2-day demo course. So if you're interested in our main course and you wanted to know what exactly we provide in our main course, for that you can avail this 2-day demo course for just 1 rupee. For 2 days, you can see what content we are providing, how we are covering everything, and then make a wise decision whether you want to purchase our main course or not, right? So that was the announcement, and let me show you the timetable once again. So we have already covered introduction to agriculture, agronomy and field, crop farming system, cropping pattern, agrometeorology. Today we are covering seed and sowing, and tomorrow we will be starting soil and water conservation chapter, right? Chalo, let's move ahead. So first, let's see the questions that I have given you in the previous class. So first question was saffron, one of the premium crop in India and around the world, is grown abundantly in which of the agroclimatic zone? So students, we know saffron is mostly grown or cultivated in Jammu Kashmir, and Jammu Kashmir falls under which agroclimatic zone? Western Himalayan region. So right answer for this question will be Western Himalayan region, right? Next question was identify agroclimatic zone where more than 50% of coconuts are historically concentrated or which represent heart of Indian coconut cultivation. So answer for this will be East Coast Plain and Hills. Okay? Okay, I think it's clear. Let's move to the today's question. So let's see what are the questions of the day. So students, this is your first question. I want all of you to please read the question carefully and then give me the answer. If you can solve the question, let me know answer in the chat section. Otherwise, I'll give you the answer. I'll explain you everything, right? So the statement says a seed comprises an embryo, a protective seed coat and stored food reserve. A seed coat developed from outer integuments layer of the fertilized ovule. The ovary swell develop into fruit enclosing the seed. Grains are always genetically true to type and undergo certification prior to commercial sale. Which of the above statements are correct? What will be your answer? What will be your answer here? Okay. So this particular question is all about seed or structure of seed, right? So today we are going to discuss about seed and sowing. So first you need to understand what is seed, what is the structure of seed, and then here is the last statement regarding grains. So we need to understand the difference of seed and grains, right? Now, if anybody have the right answer, please let me know. Otherwise, I'll proceed and I'll explain you first. Okay, I can see people are giving the right answer. Very good. Very good. Right? Okay. Answer will be option B. Statement 1, 2 and 3 are correct while statement 4 is incorrect. Okay. Those who have given answer, can you tell me why statement 4 is incorrect? Quickly, can you tell me why statement 4 is correct? Incorrect, sorry. Okay, anybody? Those who have given the right answer, please. It says grains are always genetically true to type and undergo certification prior to commercial sale. So why this is incorrect? What should come in place of grain? Yahi bata do. Anybody? Okay, no issue. I'll explain you the concept and I'll tell you what is the correct statement, right? So first let us understand what is seed. So students, what is a seed? Seed is a small embryonic plant enclosed in the covering called seed coat and usually with some stored material, right? So students, yes, very good Aditya, because it will be seeds, not very good. Aman, Sandeep, Vasu, voice of Sarah, theek hai, very good Aditya, Jatin,
ठीक है, दैट मीन्स यू नो द कंसेप्ट, ठीक है। चलो, तो सीड क्या है? सीड समझ लीजिए, सीड इज अ एम्ब्रियोनिक प्लांट. सो सी, we know that whenever we sow seed, a new plant comes out of that seed, right? We get a complete new plant from a single seed. So what is that plant, or how that plant is growing out of seed? Because student, if we see the structure of seed, seed has already a small embryonic plant in it. So you can say miniature plant is already present inside the seed, which is known as embryonic plant, okay? And this embryonic plant, when when the seed is sown in the soil and the seed get all the favorable environment for the germination, then this embryonic plant comes out and it form your entire plant, right? So talking about structure of seed, so if we see the seed structure, seed has this embryonic plant which develop into new plant, right? Then seed is covered with a seed coat. Now students, this embryonic plant need to be protected, right? Sorry, it need to be protected, right? So to protect it, in order to protect it, there is a seed coat. There is a seed coat which covered this embryonic plant. Now students, one more thing. Initially to support this plant, to support this embryonic plant to come out of the seed, or for the initial germination, this embryonic plant will require some kind of nutrients, right? Some kind of food will be required for this plant. So this will grow with the help of nutrient, because initially this seed do not have roots. Roots nutrient को absorb करती है plant के लिए, right? But initially इस plant के पास कोई root नहीं है. इस plant को भी energy, food की जरूरत होगी to come out of the seed and in order to germinate, right? So that is why there is some food reserve already present in the seed. तो अगर हम seed का structure देखें, it is very simple. It has an embryo which is the embryonic plant, right? It is covered with a seed coat, right? And it has some amount of food reserve also. So this is about the structure of seed. Now students, I hope it's clear, right? I hope it's clear. Let's move to the difference of seed and grains. Now you might have often seen or heard that sometimes we say seed, sometimes we say grain. Okay? If I give you a wheat seed, okay, how that wheat seed, because you can use these seeds either for the next crop, or growing next crop, or you can use the same seed for consumption purpose also, right? So basically the purpose is different. Okay, if you are growing crop to produce seed, basically you want good seed from that crop so that that seed can reach to the farmer and farmer can get the good yield. Then the production or the seed that the output that you're getting is the seed. But when it has reached to a farmer and farmer has grown the seed, and then after that whatever crop or whatever yield farmer has got, that yield is taken to the consumer, right? Now what we will do when we get the wheat or when we get the rice, what we do? We consume it. We do not sow the seed of rice, right? Rather we consume it. So the purpose is different. Then there it will be called as grain, right? देखो wheat का जो seed होता है वो आप seed की तरह भी use कर सकते हो, वो consumption के लिए भी use कर सकते हो, right? तो अगर किसी फार्मर ने क्रॉप को ग्रो किया कि वो क्रॉप का सीड बनाना चाहता है, राइट? इफ आई वांट टू प्रोड्यूस व्हीट सीड, व्हाट आई विल डू? आई विल ग्रो व्हीट सीड, आई विल ग्रो व्हीट क्रॉप, एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग whatever I'll have will be wheat seed that I have I have grown in well condition. क्योंकि जब भी सीड बनाने की प्रोसीजर होगी, ऑब्वियसली इट विल बी टेकन इन माइंड कि वो जो सीड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बने. जबकि ऑन द अदर हैंड आप उसी वीट को ग्रो करो कमर्शियल पर्पस के लिए, सो यू विल नॉट टेक केयर ऑफ थिंग्स लाइक कि उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ फॉर द कमर्शियल पर्पस. अल्टीमेटली आपने उस सीड को कंज्यूम करना है. बट जब कोई क्रॉप ग्रो की जाती है सीड प्रोडक्शन के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सीड हेल्दी हो, द सीड इज ऑफ गुड क्वालिटी, सो दैट वेन एवर फार्मर सो दैट सीड, उस सीड से एक हेल्दी प्लांट डेवलप हो. Clear? So that is the difference of seed and grain, right? So students, when we talk about seeds and grain, seeds क्या होते हैं? Seeds are viable. Viable means they are live, they are alive. ठीक है? You cannot grow a dead seed. You cannot germinate a dead seed.
seed should have a live embryo, means the embryo which we have discussed in the previous slide, this embryo should be viable, this embryo should be alive inside the seed in order to germinate. So always whenever we grow seed, we take care of this thing, whatever seed we are having or however we are storing the seed, the embryo should not die, right? So embryo should be alive. So seeds are viable, meaning they are alive and can grow into new plant. If they are not alive, then they will not germinate, they will not grow into a new plant, right? Then grain may be or may not be alive. देखो grains के लिए we don't consider this thing, okay? If the embryo is dead, we are not, considered about it, because ultimately we have to consume it, right? So that is the first difference. Coming to the next difference, producer under planned and organized seed production. Produce under planned and organized seed production programs. So if we want to produce seed, we should have some kind of, planned, and we should have some kind of structural way of growing the crop. क्योंकि अगर हम planned way से grow करेंगे, then only we will be able to harvest good quality seed. अगर कोई भी प्लानिंग नहीं होगी, आपने कुछ भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लिया, कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस कर दी, जिस वजह से आपका जो सीड है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, देन अगेन दैट इज ऑफ नो यूज. आपकी जो सीड बनेगा दैट इज ऑफ नो गुड क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, whenever seeds are produced, they are produced under some set of programs, okay? They are produced under some set of standards. Now coming to the grains के लिए we do not take care of that thing, right? Rather we just see how can we increase the production, okay? How much yield we are getting. तो उसके लिए हम we don't take care कि क्या किस quality का grain बन रहा है. We just need high production, right? Coming to the seed, so come from known and pure variety. So see, whenever I want to produce seed, ठीक है, मुझे मार्केट में लाइक सीड कंपनी खोलनी है एंड आई वांट टू प्रोड्यूस सीड ऑफ व्हीट. सो व्हेनेवर आई विल डेवलप सीड, सो आई विल मेक श्योर कि मैं फार्मर को बताऊं, और whoever will take the seed from me, obviously he will ask me कि ये किस वैरायटी का सीड है, या फिर मुझे ये वैरायटी वाला सीड चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that I should develop seeds from the same variety. और जब भी seed grow किए जाते हैं, for that we know what variety is it, what cultivar it is, what what type of wheat seed it is. So basically all these things are known already for the seeds. But grain के purpose में ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर आपको consumption के लिए wheat लेना है, you will just say that okay I want 10 kgs of wheat seed, okay? You will not say कि मुझे इस variety का wheat seed खाना है, right? That is not important there. Sometimes it's important but not usually, that we have seen. But seeds के लिए आपको हमेशा पता होगा, right? Then it go under strict quality checks. It is very important. Whenever we grow seed, there should be some quality check which it should undergo, क्योंकि हमें यहाँ पे quality को maintain करना है. जबकि ऐसी कोई quality check नहीं की जाती है for the grains, right? Then high purity, these are of high purity, okay? Whatever seeds we have, they are of high purity, means they are true to type, like, or the genetic makeup is true to type. अगर हमने बासमती राइस ग्रो किया है, like for example variety A का बासमती राइस का सीड हमने ग्रो किया है, so it will have the genetic characteristic of बासमती राइस of variety A only, right? And it will have good germination ability, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी है कि हमारा जो सीड है that is healthy, ठीक है? तो उसकी germination ability ज़्यादा होगी. Germination ability basically when you sow the seed, तो वो कितनी जल्दी germination या germinate होता है, that is germination ability. But ऐसा कुछ नहीं ध्यान रखा जाता in terms of grains. And when we talk about seed, so it go through different steps like processing, treatment, packaging, labeling. All these things are required, and no such thing is required for the grain, right? So this is the difference between seeds and grain, right? I hope now you have understood कि seeds और grain का क्या actual difference है. Clear? And that is why जो आपका question था उसमें जो fourth statement था, grains are always genetically true to type and undergo certification prior to commercial sale. It is wrong, because seeds are the one that goes under a different kind of certification program, or they are genetically true to type. Clear? Okay, very good. So with this we have completed this understanding. Now please solve this question.
Which of the following field crop requires a recommended seed rate of 4 to 6 kg per hectare? Castor, mustard, safflower, lucerne, pearl millet. What will be the answer? What will be the answer of this question? Okay, anybody with the answer? Very good. It is mustard. ठीक है. So student, out of all, mustard is the crop that requires seed rate of 4 to 6 kg per hectare. अब हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सीड रेट होता क्या है, राइट? व्हाट इज सीड रेट एंड और जो सारी क्रॉप्स है उनका सीड रेट क्या है वो देखेंगे. तो स्टूडेंट, सीड रेट क्या होता है? इट इज बेसिकली is the mass or number of seeds required to plant a specific area of land such as kilogram per hectare to achieve best crop yield. ठीक है, इसको समझते हैं. So we have a certain land. ठीक है, आपके पास एक fixed land है. You have 1 hectare land, right? You have 1 hectare land and you want to grow wheat, for example, on this land you want to grow wheat in Rabi season. Now, how do you decide how much amount of seed is required to grow wheat in this particular land effectively? क्योंकि it's very important. आप अगर बहुत ज़्यादा seed sow करेंगे, what will happen? There will be crowding and there will be a lot of competition among plants and your yield will impact, right? बहुत crowding हो जाएगी, बहुत जो आपका competition है वो बढ़ जाएगा plants के बीच में अगर आपने ज़्यादा seed sow कर दिया, right? बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने कम सीड सो किया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 हेक्टेयर लैंड 1 और 10,000 प्लांट्स को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? इफ इट सपोर्ट्स 10,000 प्लांट्स, राइट, एंड यू हैव जस्ट सोन 7,000 फॉर से, राइट, यू हैव जस्ट सोन 7,000 प्लांट, व्हाट विल हैपन? यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर ईल्ड, राइट? आपका जो है नुकसान होगा इसमें क्योंकि आपने 3,000 प्लांट्स कम ग्रो किए हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आपने यहाँ पे 15,000 प्लांट्स ग्रो किए, व्हाट विल हैपन? यू हैव डन ओवर क्राउडिंग, जिसकी वजह से देयर विल बी कॉम्पिटिशन between crop plant for the nutrient, for the water, for the resources, and ultimately your crop yield or the quality will deteriorate, right? So it's very important to know what is the optimum amount of seed that is required for a certain area. And students, for different crop we have different seed rate, because when we see the seed size of different crop, they are different. Okay, some crop are of very small size seed, some have medium size seed, some have big size seed. So based on the size of seed also this seed rate depends. Based on area also it will depend, right? So there are so many factors on which the seed rate depend, but you have to understand the number of seed that should be grown optimally on a unit mass or on a unit land, that is called seed rate. ठीक है, so that is called seed rate. Now students, different crop has different seed rate. I have told you already, right? So see, seed rate of wheat will be different from seed rate of maize, right? Because if we compare the size, because wheat and maize is something that you all might have seen. So seed of wheat is small as compared to the seed of maize, right? So due to the difference in size, due to the plant body also, maize is a very tall plant, wheat is a very short plant, right? So क्या plant की body रहती है, size क्या रहता है, based on that seed rate differs. और आपको ये seed rate याद करना है, not for all the crops, but at least for the important crops like rice, wheat, okay, maize, potato, cotton, soybean, things, crops like that. तो यहाँ पे if we see wheat का जो seed rate है that is 10 to 15 quintal per hectare. Potato is, sorry, I think this is wrong, right? It's wheat is 100 to 25 kg per hectare. जो potato का है that is 10 to 15 quintal per hectare, right? If I talk about hybrid cotton, right? तो hybrid cotton का जो sorry, जो hybrid cotton का सीड रेट है, आई थिंक इट्स
it's 2.5 to 3 kg per hectare and सोयाबीन का is 70 to 80 kg per hectare. ठीक है. So students, I think ये list जो है ये गलत हो गई है यहाँ पे. This is a wrong table that has been placed here. But okay, mustard, safflower, castor. ठीक है, इसमें से देखो कैस्टर, सैफ्लार, ल्यूसन, पर्ल नट नॉट इम्पॉर्टेंट. मस्टर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका याद कर लो 4 to 6 kg पर हेक्टेयर. बट यहाँ पे आई विल हैव टू कंफर्म दिस. ठीक है, आई विल हैव टू कंफर्म दिस. जस्ट वेट अ मिनट. there is some error in the table. ओके सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये शायद कोई दूसरा क्वेश्चन था जिसके लिए आपको मैच द फॉलोइंग करना था, राइट? तो ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैच कर लेते हैं. तो वीट का जो सीड रेट है दैट इज 100 to 125 kg पर हेक्टेयर, ये आपको याद रखना है. पोटैटो का जो सीड रेट है दैट इज 10 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर. हाइब्रिड कॉटन सीड रेट इज 2.5 to 3 kg पर हेक्टेयर एंड सोयाबीन इज 70 to 80 kg पर हेक्टेयर. So this is your seed rate of these crops. Again seed rate क्या है और कुछ important crops का आपको seed rate याद रखना. That's it. ठीक है, चलो. Next question for you is this. Please, okay, yes. Please read this question and give me the answer. Right. So it's a match the seed dormancy breaking technique with its operational method and representative crops. Right. So your methods are scarification, stratification, hot water treatment, leaching. Please quickly read all the statement that has been given to you and then give me the answer. Right? Is it visible? Is it visible? Please let me know. Is this table visible? Okay, I think it's visible, right? Okay. Anybody with the right answer? So here we are covering basically seed dormancy, right? Seed dormancy and method to break seed dormancy. Okay, I can see one person with the answer. Okay. Please avoid these things, okay? It will be like P1, P3, P2. Now identify the answer. Okay, answer here is option D. Very good. I can see most of you have given the right answer. Okay. Let's understand this in detail, right? So students, let's see what was the option D. So it is P3, that is scarification is basically mechanical revving or scratching scratching to soften the hard seed coat. Stratification is basically your exposing seed to the low temperature. Hot water treatment is soaking seed into 77 to 100 degrees Celsius. Leaching is soaking in water to leach out the chemical inhibitor, right? Let's see and understand them in detail. So first we need to understand what is seed dormancy. Okay. Now students, you might have seen that there are few seeds that we need to keep aside for certain amount of time, and then only you can grow them, right? Because there is a time period required for certain seed to cover, to be in a dormant state, and after that period they will become active and they are viable, but they will become active and they can germinate. तो काफी सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें ये सीड डॉर्मेंसी देखने को मिलती है. अब ये सीड डॉर्मेंसी क्यों होती है? ये बहुत अलग अलग वजह से होती है, राइट? सीड डॉर्मेंसी बेसिकली ऐसा समझ लो, इट इज अ डॉर्मेंट पीरियड फॉर सीड. वो पीरियड जब सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है, द पीरियड इन विच सीड डू नॉट जर्मिनेट और इज इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन, दैट इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी, राइट? सो सीड भी अपनी डॉर्मेंट स्टेट पे है, एंड देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर सीड टू बी डॉर्मेंट. पहला रीजन हो सकता है जो सीड का सीड कोट है, राइट? दैट इज वेरी हार्ड. सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू फ्रेशली हार्वेस्ट द सीड, तो फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड में जो सीड कोट होगा दैट इज वेरी हार्ड, ओके? और हमें उस सीड को कुछ टाइम के लिए
रखना होगा, so that with time जो seed coat है that become very thin and it breaks and then the seed is easily able to germinate. दूसरा रीजन हो सकता है that there can be some chemicals or inhibitors which are already present inside the seed which are not allowing seed to germinate, right? Then there can be some hormones. So there are so many reasons for which the seed germination is not, or the seed go to a dormant condition, right? Now let's see what are the method of breaking this dormancy, because ultimately we want to sow the seed, so we need to understand all the methods that help us to break this seed dormancy so that we can easily grow the seed, right? So first method is scarification. So scarification, so you can learn this from scar, making scar on seed coat. I have told you, when the seed coat is very hard or it's very tough, you need to break the seed coat. You have to make a scar on seed coat. It can be by mechanically rubbing the seed with some kind of material or by hammering the seed, right? Anyway, you have to make the scar on seed coat so that seed, whenever seed is allowed to germinate, it can germinate easily, right? Next is hot water treatment. So students, sometimes seed are soaked in hot water. You can see from the picture also that seed is tied to a bag and then seed is dropped to a hot water. So temperature here is 77 degrees to 100 degrees Celsius, right? So hot water treatment is given so that if there is any chemical which is present in the seed that can break down, right? वो break हो सके due to high temperature, or seed can become soft, right? So that it can easily germinate. So that is the hot water temperature treatment. Then leaching is also another method. So sometimes you might have seen sprouting कैसे की जाती है, right? So we soak these we soak the seed overnight and then in the morning we see the sprout. तो वो भी एक तरीका है dormancy को break करने का. So उसके लिए method होता है which is your leaching. Leaching is basically when you soak seed in water overnight. So all the chemical that get dissolved inside the seed, and now the seed is easily able to germinate, right? So that is the another method. And now next we have is the stratification. Stratification is basically exposing seed to लो टेम्परेचर, ठीक है? जब हम सीड्स को लो टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं, ड्यू टू दैट ऑल्सो इन सर्टन केस सीड डॉर्मेंसी इज ब्रेक्ड, एंड ये भी एक तरीका है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का, ठीक है? देन लास्ट मेथड इज लाइट ट्रीटमेंट. इन सम सीड यू गिव अ लाइट ट्रीटमेंट. बेसिकली ऑल द सीड्स आर प्लेस्ड अंडर लाइट, ओके, एंड लाइट ट्रीटमेंट की वजह से डॉर्मेंसी ब्रेक होती है. दैट इज नोन एज लाइट ट्रीटमेंट मेथड, राइट, ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी, कि सीड समटाइम need a dormant stage or they are in a dormant state for certain amount of time, so that time is known as seed dormancy, right? It can be break through different methods. Scarification, where we are making any scar on the seed coat. Then we have hot water treatment, where we are doing a hot water treatment at 77 to 100 degrees Celsius. Then leaching is basically soaking seed in water overnight, right? Then stratification, wherein we are exposing seed to the low temperature. Then there is a light temperature where we are exposing seed to the light, right? So that dormancy can be break, right? So these are all different methods of breaking seed dormancy. Okay, coming to the next question. Next question is, in which sowing method are seed mixed with sand in a ratio 1:15 or 1:10 to achieve even distribution across the field? Okay. Anybody with the answer? What will be the answer here? ठीक है. Anybody with the answer? What will be the answer for this question? Very good, Aman. Anybody else? ठीक है, very good, Vasu. It will be broadcasting of tiny seeds. ठीक है. Now students, this particular question is from the topic seed sowing method, right? We have discussed what is seed. We have discussed difference of seed and grain. We have discussed कि okay, seed go through sometimes a dormant stage, and how do we break that dormancy. Now once we have understood कि हाँ seed dormancy को कैसे break करना, we have to
अंडरस्टैंड हाउ डू वी सो दीज सीड्स. ठीक है, कौन कौन से मेथड है टू सो सीड इन द फील्ड. नाउ so let's talk about these types of seed sowing method. ठीक है, तो when we'll understand these methods, then you will understand how broadcasting of tiny seed is the answer to this question. ठीक है, so students, seeds are sown in the field by different methods. First is broadcasting, then is dibbling, then is seed drilling, then is transplanting, and then it is sowing behind the plow, right? So first is broadcasting. Basically it is very cheap method of doing seed sowing because less less equipments are required here. Only you just need to just broadcast or throw seeds randomly on the field. तो मोस्टली इंडिया में आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज होता है जहां पे फार्मर जस्ट टेक द सीड एंड रैंडमली स्कैटर्ड ऑन द फील्ड. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रैंडम सोइंग. रैंडम सोइंग भी इस टाइप के सीड सोइंग मेथड को कहा जाता है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्टिंग जरूरी हो जाती है कुछ सीड्स में जहां पे आपके जो सीड्स का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, स्मॉल सीड साइज जब होता है तब भी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है. तो अगर आपका सीड साइज इज वेरी वेरी स्मॉल देन यू कैन नॉट जस्ट पिक वन सीड एंड सो द सीड एट अ प्लेस. ठीक है, बाय एनी मेथड यू कैन नॉट जस्ट मेक श्योर दैट दी सीड्स आर प्लेस्ड वन एट अ टाइम, और किसी तरीके से आप लाइन सोइंग कर लो. लाइन सोइंग भी करोगे तो एक जगह पे काफी सारे सीड्स एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या एक साथ गिर जाएंगे आपके फील्ड में. क्योंकि क्या होता है कि लाइन सोइंग में आप क्या करोगे, लाइंस बनाओगे या फिर किसी इम्प्लीमेंट को रन करोगे तो उससे भी क्या होगा कि लाइन में भी काफी सारे सीड्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे, राइट. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट फील्ड में एक ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी हो. तो जो ये बहुत छोटे से टाइनी से सीड्स होते हैं दे कैन नॉट बी सोन बाय एनी अदर मेथड, सो वी नीड टू डू ब्रॉडकास्टिंग फॉर देम, राइट. Now students, how do we make sure that these seeds are evenly spread in the field? क्योंकि when you take these tiny seeds, there can be chances that at some area you are throwing more seeds and some area you are throwing less seed. और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे सीड्स आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो फील्ड में, राइट, अननेसेसरी जो इतना रिक्वायर्ड नहीं है. सो इसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है बाय एडिंग सैंड. ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सीड्स को लेते हैं, टाइनी सीड्स को लेते हैं एंड देन वी ऐड सैंड टू इट. ठीक है, रेशो इज 1:10 और 1:15 जो हमने डिस्कस किया था. सो बाय एडिंग सैंड अब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, राइट. तो पर यूनिट या पर वॉल्यूम आपका जो सीड है वो कम हो जाएगा, राइट. तो उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी अचीव हो सकता है फील्ड में, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सीड सोइंग विच इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, right. Broadcasting is just evenly randomly scattering the, not evenly, यहाँ पे even scattering तो possible नहीं है until and unless the person who is doing is a skilled person. ठीक है, काफी लोग skilled भी हो जाते हैं कि they are doing broadcasting और बहुत ही uniform plant germination देखने को मिलता है, but it's not possible for each and everyone. तो इसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसमें हम इसको सैंड में मिक्स करते हैं. अब सैंड में जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ सीड्स है, व्हेन यू आर होल्डिंग द सीड्स इन योर हैंड, नंबर ऑफ सीड्स अब कम हो गए, राइट. कुछ सैंड आपके हाथ पे आ गया, तो जब आप उसको स्कैटर करोगे तो काफी इवनली या फिर कम सीड्स आप थ्रो करोगे एट अ प्लेस, राइट. सो दिस इज द मेथड विच इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट मेथड इज डिबलिंग. सो फॉर डूइंग डिबलिंग, डिबलर्स आर यूज. ठीक है, पहले तो आप ये याद रखो कि इसके लिए डिबलर यूज होते हैं. ठीक है, व्हाट आर डिबलर? डिबलर एक टाइप का टूल है, एक टाइप का टूल है जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है फील्ड में होल्स बनाने में. ठीक है, सो व्हाट वी डू इन केस ऑफ डिबलिंग, वी मेक होल्स इन फील्ड with the help of dibbler and in these holes we put or we place the seed. ठीक है, so that is the method which is known as dibbling. अब dibbling के केस में क्या ensure कर सकते हो, you can ensure what should be the distance between two plants because you are manually making holes in the field. So you can make sure that, or you can ensure whatever distance you want to keep between two plants. Also you can maintain the depth, to what depth you want your seed to go, right? So that is the advantage of dibbler. So here you can maintain the gap between plant plus depth of seed, right?
So these are the advantages of dibbler. Then we have seed drilling. What is seed drilling? Seed drilling is basically when we use a machine which is known as seed drill. Right? So there is a machine which is known as seed drill which is used. In this machine, we we place all our seed. ठीक है, हम अपने सारी seeds को इस seed drill machine में रख देते हैं, right? और ये seed drill machine में इस तरीके से होती है कि there is a container where we have placed all the seed, and through this container there are few pipes. Okay, there are few pipes that will run while we take the seed drill along the field. तो जैसे जैसे ये seed drill field को cross करेगा वैसे वैसे इन pipe से seeds will be dropped in the field. ठीक है, on the field seed will be dropped. So इस तरीके से जब हम sowing करते हैं, that is known as seed drilling. So basically when we use seed drills to sow the seed, that is known as seed drilling, right? Now coming to the one more thing which is known as ferty cum seed drill. Ferty cum seed drill. ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है. इसका फायदा ये है कि सीड ड्रिल में यू आर ओनली एबल टू सो द सीड, बट ferty cum सीड ड्रिल में क्या होता है, यू आर एबल टू ड्रॉप फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद द सीड. देखो जब भी सीड सोइंग करते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आप फर्टिलाइजर भी फील्ड में अलॉन्ग विद द सीड डालो, ताकि जो सीड को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल, राइट? सो उसके लिए एक अलग मशीन होती है दैट इज नोन एज ferty cum सीड ड्रिल विच इज यूज्ड. और इसमें क्या होता है, अलॉन्ग विद द सीड्स देर आर अदर आउटलेट. ठीक है, फर्टिलाइजर का एक अलग आउटलेट होगा, एक अलग बॉक्स होगा जिसमें फर्टिलाइजर प्लेस्ड होगा, एंड फ्रॉम दैट बॉक्स अलॉन्ग विद द सीड आपका फर्टिलाइजर भी प्लेस होगा फील्ड में. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस इज डन, एंड इस मेथड को बोला जाता है सीड ड्रिलिंग. क्लियर? क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज नोन एज ट्रांसप्लांटिंग. ट्रांसप्लांटिंग क्या मेथड है? बेसिकली समटाइम्स we cannot directly sow the seed into the field. What we do, we make a small nursery. ठीक है, ये नर्सरी क्या है, एक स्मॉल एरिया है जहां पे हम बहुत सारे सीड्स को रैंडमली ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं, राइट? एंड आफ्टर 15 to 20 days क्या होगा, ये सीड जर्मिनेट होंगे, we'll have the seedlings, right, of 15 to 20 days old. So we'll transplant these 15 to 20 days old seedling to the main field. आपका जो मेन फील्ड होगा जहां पे आपको ये क्रॉप ग्रो करनी है, आप नर्सरी से इस प्लांट को, इस सीडलिंग को उखाड़ के ले जाओगे एंड यू विल प्लेस इट इन द मेन फील्ड. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटिंग. ठीक है, एंड इट इज वाइडली डन इन राइस. ठीक है, तो राइस में मोस्टली आपकी ट्रांसप्लांटिंग मेथड ऑफ सीड सोइंग की जाती है. देन वी हैव अ सोइंग बिहाइंड द प्लो. एक और मेथड है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेडिशनल प्लो फार्मर्स यूज करते हैं, द वुडन प्लो दैट यू माइट हैव सीन ऑल्सो. ठीक है, मूवी में देखा होगा या फिर कहीं और देखा होगा, या फिर जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है वहां पे भी आपने देखा होगा कि फार्मर्स के पास वुडन प्लो होता है, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग प्लोइंग है इन इंडिया. तो समटाइम्स व्हाट इज डन कि जैसे जैसे फार्मर फील्ड को प्लो करता है, बिहाइंड फार्मर ईदर सम पर्सन विल ड्रॉप द सीड, राइट? कि जैसे, क्योंकि जब प्लो होता है फील्ड, क्या होता है, प्लो होने के टाइम पे फरो ओपन होती है, राइट? यू आर कटिंग द सॉइल. सो व्हेन यू आर कटिंग द सॉइल, यू आर बेसिकली ओपनिंग द सॉइल, एंड व्हेन यू ओपन द सॉइल यू कैन ड्रॉप सीड इन द सॉइल, एंड इन द नेक्स्ट go you can close the soil, right? So either manually some person will drop the seed behind the plow that when farmer is plowing the field, or sometimes a funnel is attached, right? तो अगर ये plow है, right, if this is a plow, ठीक है, if this is a plow and it is plowing the field, if this is a plow, it is plowing the field basically. Sorry for my drawing, ठीक है, इतनी अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊंगी ड्राइंग के थ्रू, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. कि अगर प्लो के थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल ये प्लो है, दिस इज द पार्ट विच इज कटिंग द सॉइल, राइट, विच इज कटिंग द सॉइल. तो इस प्लो के साथ साथ यहाँ पे फॉर से फार्मर है, यहाँ पे एक फनल यूज करते हैं, एक फनल अटैच किया जाता है. दिस इज अ फनल, राइट? तो जैसे जैसे ये प्लो सॉइल को ओपन करेगा वैसे वैसे फनल से सीड ड्रॉप करेगा सॉइल में, राइट? दिस प्रोसेस इज नोन एज सोइंग बिहाइंड द प्लो. ठीक है, ओके. सी डिबलिंग जो की जाती है आप सारी क्रॉप्स में कर सकते हो. यू कैन डू दिस फॉर मोस्टली इट इज डन फॉर द ब्रॉड सीडेड क्रॉप्स, बट
इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेबर इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, कम जगह पे, तो आप बेसिकली आप इसको लार्ज एरियाज में नहीं कर सकते. व्हेन यू आर डूइंग यू आर मेकिंग किचन गार्डन और छोटे एरिया पे आप प्लांटिंग कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर द डिबलिंग. ठीक है, और सारी क्रॉप्स के लिए डिबलिंग की जा सकती है. ओके, एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट टू आस्क? कोई कंफ्यूजन है इसमें? आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है समझने के लिए. स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो. ठीक है, शैल आई मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, next question for you is, in a ferticum seed drill, where is the fertilizer placed relative to the seeds row to prevent chemical injury to young roots? Okay, if anybody know the answer please let me know, otherwise I am going to explain you this concept as well. ठीक है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया सीड सोइंग मेथड, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. किसी को आंसर पता है प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल टेल यू. Anybody? Okay. Okay, Aditya has attempted the question. Anybody else? Very good. Voice of Swara. ठीक है, चलो, नो इशू. तो स्टूडेंट्स आंसर जो होगा इसका, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर बिलो एंड 5 सेंटीमीटर टू द साइड ऑफ द सीड रो. ठीक है, तो बेसिकली ऐसा करते क्यों हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू प्लेस फर्टिलाइजर अवे फ्रॉम द सीड, ये समझ लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर इज अ केमिकल. इट इज अ chemical, right? So if you put chemical directly in contact with the seed, what will happen? Your seed might get damaged. Okay, there can be a physical damage, or there can be some chemical reaction that can deteriorate the quality of seed, or even can lead to the death of the seed, and you don't want that, right? So that is why it's very important, whenever we are placing seed in the soil, we should always, whenever we are placing both seed and fertilizer in the soil, so we should maintain some distance between them, right? Either what you do, either you place first fertilizer 5 सेंटीमीटर बिलो सीड. ठीक है, आपने क्या किया, फर्टिलाइजर को 5 सेंटीमीटर बिलो सीड प्लेस किया, या फिर फर्टिलाइजर को 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सीड सो किया. ये सीड की जो रो होगी, राइट? इफ दिस इज द रो वेयर यू आर सोइंग द सीड, दिस इज द रो वेयर यू आर सोइंग द सीड. ठीक है, ये आपकी सीड की रो है. तो आपका जो फर्टिलाइजर होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट. इतना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो सीड को डैमेज ना करे, राइट? ताकि जो फर्टिलाइजर है वो सीड को डैमेज ना करे. ठीक है, तो या तो वो 5 सेंटीमीटर नीचे हो या साइड में हो, या फिर दोनों भी हो सकता है कि आप 5 सेंटीमीटर नीचे और 5 सेंटीमीटर साइड का डिस्टेंस रख के फिर फर्टिलाइजर को प्लेस करो फील्ड में. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट देर इज नो फिजिकल डैमेज और एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द सीड. ठीक है, ओके, चलो. इट शुड बी नेवर डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ सीड. अगेन रीजन इज द सेम, क्योंकि इट विल डैमेज योर सीड. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लांट इलास्टिसिटी एंड ग्रोथ हैबिट. Determinate crops stop vegetative growth after flowering, possess low elasticity and require closure uniform spacing. Intermediate crop exhibit continuous branching having high elasticity. Higher plant elasticity implies that crop cannot modify its branching when provided extra space and nutrient. Anybody with the answer? ठीक है. Can anybody give the answer to this question? Okay. Sorry. So answer for this question will be, students, option B. ठीक है, statement 1 and statement 2 are correct while statement 3 is incorrect.
Very good, Sandeep. Sandeep has given the right answer. Good. ठीक है. Now let's understand how and why. First of all, we have to understand the meaning of determinant crop. Determinant crop क्या होती हैं? Basically crops where you get only one harvest. ठीक है. आपने wheat grow किया. Wheat has come to the harvesting. One harvesting is sufficient because at a time all the grains of wheats are getting mature, right? So you have to do just one harvesting. Similarly in case of rice, similarly in case of sorghum, pearl millet, etc. ठीक है, you have to just once harvest the seed or you have to once just harvest the crop, right? Then we have another kind of crop like tomato. ठीक है, classic example is tomato. So when if you have ever grown tomato or seen a tomato plant, or if you have ever got the chance to pluck tomato from a tomato plant, so you will see that in tomato plant few tomato has ripened, few are in the flower stage, few are in the bud stage, few are still unripe, right? So there need multiple harvest. These plant need multiple harvest. So basically what they do, they throughout their life they keep on producing branches. Okay, they keep on producing branches and you have to do multiple harvest. Okay, that is the difference of determinate and indeterminate plant. Now let's come to this topic, what is plant elasticity. Plant elasticity is basically a term used कि we have a plant which is growing in field condition. This is a field condition, right, where your multiple plants are growing, and then we have a plant which is growing in ideal condition. What is ideal condition? That this plant has sufficient space, sufficient nutrient to absorb, right? So what will happen? Obviously the productivity of this plant which is growing in ideal condition will be more, because plant have sufficient space to grow, sufficient nutrient to absorb, there is no competition, all conditions are ideal. So obviously the productivity of this ideal condition plant growing in ideal condition will be more as compared to the plant which is growing in field condition. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो डिफरेंस आता है प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में इन दोनों कंडीशन में, उसी को ही प्लांट इलास्टिसिटी कहा जाता है. ठीक है, अब अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें कि हाई प्लांट इलास्टिसिटी इंप्लाइज दैट क्रॉप कैन नॉट मॉडिफाइड ब्रांचिंग व्हेन प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा स्पेस एंड न्यूट्रिएंट, तो ये गलत है. हाई प्लांट इलास्टिसिटी मतलब होता है कि व्हेन प्लांट के ये जो इलास्टिसिटी हाई है, मीन्स ये जो डिफरेंस है ये हाई है, इसका मतलब है कि ये जो प्लांट है इसको अगर हम और ज़्यादा न्यूट्रिएंट एंड स्पेस दें तो ये प्लांट और अच्छा ग्रो करेगा, ये जो डिफरेंस है वो और ज़्यादा होगा, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट इलास्टिसिटी एंड दैट इज हाउ योर स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, राइट? I hope now this determinant, indeterminate and plant plasticity, plant elasticity is clear. ठीक है, चलो let's move to the next question. In which plant geometry 4 perennial plants are arranged in square with an additional temporary filler crop planted in the center? This question has been asked in your examination, so please tell me this question. I'll explain you all the plant geometry and we'll see exactly when this question was asked to you in your exam through next question. ठीक है, चलो. Anybody with the answer? Okay, quickly, we have to cover more questions, so please be fast, be quick in giving the answers. ठीक है, very good. It is quincus or diagonal pattern. ठीक है. Now students, let us understand what is the plant geometry. Plant geometry होती क्या है? तो plant geometry students basically, ठीक है, plant geometry. तो प्लांट ज्योमेट्री क्या है कि हमने देखो सीड रेट डिसाइड कर लिया कि हाउ मेनी सीड वी वांट टू सो इन द फील्ड, बट किस ज्योमेट्री में, क्योंकि कितना डिस्टेंस आपके प्लांट्स के बीच में होना चाहिए, राइट? किस ज्योमेट्री में आप इस इन प्लांट्स को अरेंज करना चाहते हो फील्ड में, दैट इज योर प्लांट ज्योमेट्री. सो दिस इज अ फील्ड फॉर एग्जाम्पल एंड you use this pattern for growing your crops. So here if your distance of row to row and plant to plant is equal, right? If distance is equal, then it will form a square, right? So this geometry will be called as square geometry. This geometry will be called as square geometry. But if the row to row distance is more but plant to plant distance is less, for say if this distance is less, right? अगर आपका ये plant यहाँ ना होके ये यहीं पे है बस, राइट?
तो अब देखो आपका रो टू रो डिस्टेंस तो ज्यादा है बट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम है, और इस ज्योमेट्री को अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगल ज्योमेट्री बन रही है, राइट? तो दिस विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल ज्योमेट्री, राइट? अदर केस कैन बी दैट यू आर यू नो सोइंग, जो आपकी क्रॉप है वो इस तरीके से कि आपने ये की रो सो की और इन दोनों के बीच में एक फिर नेक्स्ट क्रॉप में नेक्स्ट रो में क्रॉप को सो किया। अब ये क्या बना रहा है? दिस इज फॉर्मिंग अ triangle, this is forming a triangle, right? And this will be called as triangle plant geometry. Okay, this will be called as triangular plant geometry, right? I hope it's clear. Triangular, rectangle, square. अब एक और ज्योमेट्री होती है कि देखो जब हम स्क्वायर ज्योमेट्री की बात करें तो काफी सारा स्पेस आपका यहाँ पे वेस्ट हो रहा है. दिस स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड. So in some case where you are growing square geometry, you can take a फिलर प्लांट, ठीक है, इसको फिलर प्लांट बोलते हैं, दैट इज टेकन इन बिटवीन स्क्वायर ज्योमेट्री, और फिर ये ज्योमेट्री का नाम चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज क्विंकस और डायगोनल प्लांट ज्योमेट्री. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. तो वी हैव स्क्वायर ज्योमेट्री, रेक्टेंगल ज्योमेट्री, ट्रायंगल ज्योमेट्री एंड क्विंकस प्लांट ज्योमेट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीड प्योरिटी मेंटेनेंस. Space isolation involve maintaining a specified physical distance between different varieties of same crop. Time isolation involve adjusting sowing time, right? Then roguing is process of eliminating off-type plant. Roguing should ideally be performed under intense midday sunlight to spot discoloration plant quickly, right? Chalo. Anybody with the answer? Okay, so answer will be B. Very good, very good Sachin. So answer will be B. ठीक है, तो अब ये है क्या, इसका समझ लेते हैं थोड़ा सा. What is the seed purity maintenance and how it is done? So students, what is seed purity maintenance? Basically, I have told you already that whenever we want to grow seeds, whenever we grow crop for making the seeds, basically we want to make these seeds pure, we want to make these seeds true to type, right? We want genetically pure seed. Genetically pure seeds means there should be no genetic mixture. और ये genetic mixture होता कैसे है? During pollination. Pollination क्या होता है? When pollen of one plant is transferred to the female part of other flower, right? और other plant. तो इससे क्या होता है कि अगर ये दो प्लांट अलग अलग वैरायटी के हैं तो कुछ जेनेटिक मिक्सचर हो जाएगा फ्रॉम प्लांट ए टू प्लांट बी. तो पॉलिनेशन की वजह से देयर कैन बी अ जेनेटिक मिक्सचर. और जब हम सीड को डेवलप कर रहे हैं, सो वी वांट टू मेक श्योर वट एवर सीड वी आर प्रोवाइडिंग टू द फार्मर, इट शुड बी ट्रू टू टाइप. लाइक इफ आई एम सेइंग दिस इज द सीड ऑफ वेराइटी ए, then it should have all the genetic composition of variety A only. It should not have any mixture of variety B or any other variety. ठीक है, so it's very important that we have to maintain the seed purity. And how this is maintained, that is what this question was all about. So first process is to do space isolation. What is space isolation? Space isolation is basically कि आप इतना स्पेस क्रिएट कर दो दो फील्ड के बीच में that are growing same crop, that there is no chance of cross pollination. कि आपका अगर ये फील्ड 1 है then फील्ड 2 should be far away from फील्ड 1. ठीक है, अगर क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आप मेज का सीड डेवलप कर रहे हो, राइट? यू वॉन्ट टू ग्रो मेज फॉर सीड प्रोडक्शन, बट नेबर फार्मर जो आपके फार्मर है नेबर में, ही इज ग्रोइंग मेज फॉर जस्ट कमर्शियल प्रोडक्शन. अब क्या हो सकता है इस केस में, वहां से पॉलिनेशन हो सकता है आपके फील्ड में एंड आपकी जो मेज की जो वैरायटी है दैट कैन गेट कंटेमिनेटेड, राइट? तो आप क्या करोगे, यू विल मेक श्योर कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी क्रॉप, आसपास वो क्रॉप नहीं हो, या फिर आप किसी और फील्ड में उस क्रॉप को लगाओ जहां पे आसपास वो क्रॉप नहीं ग्रो की जाती है. तो बेसिकली मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फील्ड्स, दैट इज द स्पेस आइसोलेशन. देन वी हैव नेक्स्ट विच इज नोन एज टाइम आइसोलेशन. टाइम आइसोलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपका ये फील्ड है फील्ड 1, राइट? तो
फार्मर ने यूजुअल टाइम पे सोइंग की, राइट, दिस इज फील्ड 2, फार्मर इज सोइंग सीड। अगर आप ये स्पेस आइसोलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हैं, राइट, आपके पास एक ही फील्ड है, यू कैन नॉट हैव एनी अदर फील्ड, और आप इस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते स्पेस आइसोलेशन को, उस केस में अनदर थिंग दैट कैन बी डन इज टू डू स्पेस सॉरी टाइम आइसोलेशन। टाइम आइसोलेशन होता क्या है बेसिकली, इफ फार्मर इज ग्रोइंग सीड, मान लो फार्मर ने 1 जून को सीड सो किया, ठीक है, अब क्या होगा कि फार्मर 1 जून को सीड सो करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो फ्लावरिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल वो 30 जुलाई को फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एडजस्ट द टाइमिंग की जो फ्लावरिंग है वो कॉन्साइड ना करे। तो आप क्या कर सकते हो, आप 30 जून को सोइंग कर लो, ठीक है, अब आपने 30 जून को सोइंग करी, आपकी जो फ्लावरिंग आएगी फॉर एग्जाम्पल वो अगस्त में आएगी, दैट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। तो अब क्या हुआ कि आपकी जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग टाइम है दोनों फील्ड का, दैट इज नॉट कॉन्साइडिंग, ठीक है, अगर वो कॉन्साइड नहीं करेगी तो क्या होगा, अगेन क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस विल बी लेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिनेशन हो चुका होगा, फ्लावर हैज डेवलप्ड, एवरीथिंग हैज हैपेंड, एंड उसके बाद आपकी फ्लावरिंग आएगी, राइट, तो यहाँ पे फिर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होंगे। या फिर आप अर्ली सोइंग कर लो, आपके उसमें पहले फ्लावरिंग आ जाएगी, राइट, एंड देन फार्मर के फील्ड में फ्लावरिंग आएगी। तो इस तरीके से आप टाइम आइसोलेशन कर सकते हो, राइट। और एक मेथड होता है स्टूडेंट्स विच इज नोन एज रोगिंग। रोगिंग क्या होता है, समटाइम्स, ठीक है, आपने कोई फील्ड में लास्ट ईयर राइस ग्रो किया था, आपने राइस की वैरायटी ए ग्रो की थी फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा कि ऑब्वियसली देयर विल बी सम सीड ग्रेन दैट आर लेफ्ट इन द फील्ड, ठीक है, वो फील्ड में ही रहेंगे, और हो सकता है वो नेक्स्ट सीजन आपने वैरायटी बी के लिए सीड सो किया और यहाँ पे कुछ प्लांट्स वैरायटी ए के भी हो गए, तो उस केस में क्या करोगे, यू विल प्लक आउट और यू विल अपरूट द प्लांट्स ऑफ वैरायटी ए, क्योंकि अब आप वैरायटी बी ग्रो कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रोगिंग, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोगिंग। क्लियर, चलो, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Match the seed certification class in list 1 with its official certification tag color in list 2. Quickly give me the answer of this question. ठीक है, yes Sachin, that is the another method that is required, but उसके लिए आपको skilled labor चाहिए for doing emasculation and artificial pollination, plus ये mostly scientific research जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स को मेंटेन करना है। बहुत सारे प्लांट्स में आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और इमैस्कुलेशन नहीं कर सकते हैं, राइट, ओके, ठीक है, वेरी गुड, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑप्शन ए। ब्रीडर सीड का जो टैग कलर होता है दैट इज गोल्डन येलो, राइट, फाउंडेशन सीड का टैग कलर इज व्हाइट, सर्टिफाइड सीड का टैग कलर इज एज्योर ब्लू, एंड रजिस्टर्ड सीड का पर्पल, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब ये है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड देम, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। सो स्टूडेंट, सीड सर्टिफिकेशन होता क्या है, अगेन टू इंश्योर दैट द फार्मर्स आर गेटिंग ट्रू टू टाइप सीड्स, ओके, और वट एवर companies or universities or the agencies are involved in the seed production, they are producing true to type seed, and whenever farmer is buying any seed, farmer is actually getting that seed. इस चीज को maintain करने के लिए there is a seed certification procedure in our country, right? इस seed certification procedure में क्या होता है, seeds are developed in different stages, right? And we have 4 seed classes. First we have is nuclear seed, then we have breeder seed, and then we have foundation seed, and then we have a certified seed. What are these seed classes? Let us understand that in detail, because from here multiple questions have been asked in your examination. ठीक है? So first is the nuclear seed. What is the nuclear seed? Right. For example, if I am a breeder and I have developed some variety, or I have seen, okay, I have got few seed of a crop. ठीक है? For example, I have got few very good seeds of a wheat variety. ठीक है? Now that seed is only with me, because till now that variety do not exist, right? So till now that variety do not exist, and only I possess the seed, or maybe by chance I have developed a
seed of a wheat variety that is very good in itself, right? So I have that seed lot, and what I'll make sure, okay, I'll test that seed lot and I'll take care of that seed lot. So that is basically the basic seed of any variety that a breeder has, that a scientist has, right? So such seed is called as a nucleus seed. न्यूक्लियस सीड मीन्स कोई भी जो भी कोई वैरायटी बनी होगी, इनिशियल जो सीड लॉट रहा है उस वैरायटी का, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस सीड. या फिर जब भी कोई वैरायटी बनती है, न्यू वैरायटी बनती है, तो जो वैरायटी बनी, नई वैरायटी बनी, उसका जो सीड लॉट है दैट इज द न्यूक्लियस सीड. ठीक है, ये बेसिक सीड क्लास होती है दैट इज डेवलप्ड इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट, और किसी ब्रीडर या किसी साइंटिस्ट के पास ही ये सीड लॉट होता है, राइट. नाउ मैं अगर साइंटिस्ट हूं, अगर मेरे पास कोई नई वैरायटी मैंने डेवलप की है, आई विल नॉट ट्रेड दैट वैरायटी. ठीक है, फर्स्ट क्या करूंगी, मैं ही उस वैरायटी पे स्टडी करूंगी. आई विल सी द वैरायटी, आई विल टेक द पेटेंट ऑफ द वैरायटी, या तो मैं इस वैरायटी पे पेपर्स वगैरह पब्लिश करूंगी, राइट. सो आई विल फर्स्ट मेक श्योर कि ओके ये वैरायटी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है. नाउ अगर मेरा कोई फ्रेंड है, ही वॉन्ट टू डू स्टडी ऑन द वैरायटी दैट आई एम वर्किंग ऑन, तो अब मैं वो वैरायटी अपने फ्रेंड को लेंड करूंगी, राइट. देन दैट will be called as breeder seed. So what I will do, I will give some part of my nucleus seed to the next breeder or next scientist. So now next scientist will do what? Next scientist will do some kind of experimentation, or might next scientist may cross that variety with any other variety, and anything can be done from that, right. So that will be called as breeder seed. ठीक है. So since students here we do not sell the nucleus seed for any purpose, so this do not have any tag color. ठीक है, इसका कोई टैग कलर नहीं होता है. ठीक है, अब जब ब्रीडर सीड, ठीक है, अब जब ये न्यूक्लियर सीड ब्रीडर सीड बन गया या फिर ये और साइंटिस्ट के पास चला गया, तो यहाँ पे ये जो ब्रीडर सीड होगा, इसका जो टैग कलर है दैट इज येलो और गोल्डन येलो, यू कैन से. ठीक है, गोल्डन येलो टैग कलर होता है. अगर कोई सीड लॉट में एक गोल्डन टैग कलर है, गोल्डन येलो टॉप टैग कलर है, इसका मतलब है ये सीड लॉट इज अ ब्रीडर सीड. ठीक है, तो ये बेसिकली जो टैग कलर दिया जाता है टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा सीड लॉट है या कौन से स्टेज का सीड लॉट है. क्लियर. अगेन यहाँ जेनेटिक प्योरिटी न्यूक्लियर सीड की विल बी 100%, दैट क्योंकि आई हैव डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर सीड, सो मैं क्या मेक श्योर करूंगी कि इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो वही मेंटेन्ड रहे, क्योंकि ठीक है वही चीज मैंने बनाई थी या डिस्कवर की थी. अब नेक्स्ट ब्रीडर सीड में भी जेनेटिक प्योरिटी इज 100%. द ब्रीडर विल मेक श्योर, बिकॉज यहाँ पे साइंटिस्ट लेवल पे अभी सीड जो है सर्कुलेट हो रहा है, राइट. तो अगेन साइंटिस्ट विल टेक केयर ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड. तो इस तरीके से ब्रीडर सीड का भी जो प्योरिटी परसेंट है दैट इज 100%. नाउ कम्स द foundation seed. Now students, when this breeder seed is taken further, it develops foundation seed. होता क्या है, ब्रीडर सीड को आपने सो किया, कुछ पार्ट आप एज अ ब्रीडर सीड ही रखोगे और कुछ पार्ट आप उसको नेक्स्ट जनरेशन में बोलोगे फाउंडेशन सीड. ठीक है, फाउंडेशन सीड का टैग कलर होता है व्हाइट. ठीक है, फाउंडेशन सीड का टैग कलर होता है व्हाइट, और जैसे जैसे ये सीड क्लास बढ़ती है जेनेटिक प्योरिटी भी थोड़ी सी कम होती रहती है. तो आई थिंक इसका जो जेनेटिक प्योरिटी है दैट इज 99.5% और 99%. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस फाउंडेशन सीड इज फर्दर टेकन डाउन एज अ सर्टिफाइड सीड, और ये जो सर्टिफाइड सीड है इसका जो टैग कलर होता है दैट इज ब्लू. ठीक है, दिस सर्टिफाइड सीड हैज टैग कलर ऑफ ब्लू, और फार्मर के पास जो सीड जाता है दैट इज द सर्टिफाइड सीड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फार्मर्स के पास जो सीड जाता है स्टूडेंट्स दैट इज द सर्टिफाइड सीड. ओके, सो हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है, विच कैटेगरी और विच क्लास ऑफ सीड इज सोल्ड टू द फार्मर, so that is always the certified seed. इसका जो टैग कलर होता है that is blue. ठीक है, so these are few things that you need to learn for the seed certification. Now let's solve some question based on the same. Which class of seed is 100% genetic pure, is accompanied by pedigree certificate, okay, issued directly by plant breeder and serves the initial source of all future seed multiplication? Quickly give me the answer. Quickly give me the answer. ठीक है,
So students, today we do not have much time to discuss the seed certification in detail, but previously also I have taken classes on seed certification, detailed classes on seed certification. You can watch those classes, ठीक है, if you want the detailed explanation and everything. Okay, but आपके एग्जाम के लिए जितना हमने डिस्कस किया है that is more than sufficient to know. Very good, it is nuclear seed. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और टर्म आया है पेडिग्री सर्टिफिकेट. पेडिग्री सर्टिफिकेट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड ऑफ दैट सीड. ठीक है, इफ आई हैव डेवलप्ड अ न्यू सीड वेराइटी, सो फ्रॉम वेयर दिस सीड वेराइटी हैज बीन डेवलप्ड, व्हाट क्रॉसेस आई हैव डन इन past, right? So that is the record that is kept for the nuclear seed, so we can know कि from where this variety has been developed. Clear? So that is known as pedigree certificate. वो आपने याद रखना है, न्यूक्लियर सीड के लिए पेडिग्री सर्टिफिकेट मेंटेन किया जाता है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 2023 में पूछा गया था. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, बट प्लीज रीड द क्वेश्चन, डू लेट मी नो द आंसर. अगर नहीं पता है, आई विल टेल यू. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस of assessing and sorting different classes on or standards of fruit based on size, color or quality. ठीक है, तो anybody with the answer? ठीक है, जब based on size, color, purity के बेसिस पे जब हम sorting करते हैं उसको क्या कहते हैं? What it will be called? So basically after harvesting का ये क्वेश्चन है कि हार्वेस्टिंग के बाद जब हम ये सारी चीजें करते हैं, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग. ग्रेडिंग क्या होता है कि बेस्ड ऑन क्वालिटी, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन कलर, हम जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस है उसकी ग्रेडिंग करते हैं, राइट? आपने देखा होगा एप्पल्स में काफी सारे ग्रेड्स आते हैं. जो बहुत अच्छी क्वालिटी का एप्पल होगा दैट इज ए ग्रेड, उससे थोड़ा कम बी ग्रेड, सी ग्रेड, राइट? तो ये इसको बोला जाता है ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द हार्वेस्ट दैट वी हैव गॉट. ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था, ऑप्टिमम परसेंटेज फॉर ऑप्टिमम मॉइस्चर परसेंटेज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन. क्या होता है? क्या आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर परसेंटेज होना चाहिए फॉर स्टोरिंग द फूड ग्रेन? एनीबडी विद द आंसर? वेरी क्विकली गिव मी द आंसर. ये एक फैक्ट है दैट यू हैव टू लर्न, बस. ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए फॉर स्टोरिंग द फूड ग्रेन. वेरी गुड, इट इज 9 to 13%. ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद करना है फॉर एग्जाम, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया है, राइट? Now let's see the next question. 2021 में पूछा गया था. Very again we have discussed about this. The Quincus system of planting followed in which of the following crops? ठीक है, जो Quincus system होता है किन crops में follow किया जाता है? जो planting geometry हमने discuss की है, प्लीज थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि कौन सी planting में ये possible है या कौन सी crop में ये planting possible है. ओके, वेरी गुड संदीप. ठीक है, इट विल बी फ्रूट ट्रीज. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, क्विंकस ज्योमेट्री हमने क्या पढ़ा था कि वी हैव 4 प्लांट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, राइट, एंड देन एक सेंट्रल प्लांट. होता क्या है, जो फ्रूट ट्रीज होते हैं इट टेक्स 10 to 15 ईयर्स टू ग्रो, राइट? अब अगर आपने मैंगो ग्रो किया है तो मैंगो को 10 से 12 या 15 साल लग जाएंगे मैंगो फ्रूट देने में. तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हो. तो मोस्टली आपके जो फ्रूट ट्रीज हैं जिनको बहुत टाइम लगता है फ्रूटिंग में आने में, वहां पे आप ये वाली जो प्लांटिंग ज्योमेट्री है उसको फॉलो करते हो. ठीक है, तो ये भी एक चीज है आपने याद रखनी है. 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड. ठीक है, वेरी इजी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज द टैग कलर ऑफ डिफरेंट सीड क्लास. आपको बताना है सर्टिफाइड सीड का टैग कलर क्या है. 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था. वेरी गुड, आंसर विल बी ब्लू. ठीक है, वेरी गुड संदीप, वॉइस ऑफ स्वरा. और इसका आई थिंक सभी को आंसर देना चाहिए बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. ओके, 2025 का क्वेश्चन है दैट आई वांट यू टू सॉल्व. इन एग्रीकल्चर विच प्लांटिंग सिस्टम इन्वॉल्व ग्रोइंग ऑफ एन एडिशनल प्लांट एट द सेंटर of the main plant arranged at the corner of the square to increase plant population? See students, I have already told you from this topic multiple times question have been asked in your examination. We have already solved 2023 question. 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट टॉपिक पे. ठीक है, I think it's easy to answer. Please let me know answer in the comment section. Next question for you is of 2024. What is the term for the progeny of breeder seed produced by recognized agencies such as government bodies, ICR, state government organization, to ensure quality maintained
अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, ठीक है, ब्रीडर सीड से नेक्स्ट कौन सा सीड क्लास बनता है, दैट यू हैव टू टेल। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप यू हैव एंजॉयड। प्लीज डू लेट मी नो कैसी क्लासेस चल रही हैं in the comment section. And before I end, I would like to again tell you about a 2-day demo course. So if you are interested in our main course, you can avail this 2-day demo course for just 1 rupee. For 2 days, you can have access to all the things that we are providing in our main course, and then you can decide whether you want to purchase our main course or not, right? Chalo. With this, we have come to the end of the lecture. Now, if anybody have any doubt, please let me know. ठीक है, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ओके, रोगिंग क्या है स्वरा? सी, रोगिंग इज व्हाट कि व्हेन यू रिमूव ऑफ टाइप प्लांट। ऑफ टाइप प्लांट बेसिकली क्या होते हैं? प्लांट दैट यू डू नॉट नीड इन योर फील्ड, ठीक है। एक तो हो गए वीड प्लांट जिसके लिए हम वीडिंग करते हैं, राइट। वीड आर बेसिकली द कंप्लीटली अनवांटेड और अनवांटेड ग्रासेस ग्रोइंग अलोंग विद योर क्रॉप, तो वो हो गई वीडिंग। बट रोगिंग बेसिकली तब की जाती है जब आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम क्रॉप के प्लांट को रिमूव करना है फ्रॉम द फील्ड। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप वीट की वैरायटी ए को सिर्फ ग्रो करना चाहते हो एंड यू वांट ट्रू टू टाइप ऑफ वैरायटी ए सीड ओनली, तो अगर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऐसा हुआ कि वैरायटी बी के भी कुछ सीड्स रह गए फील्ड में, तो हो सकता है जब आप वैरायटी ए ग्रो करो तो वैरायटी बी के भी कुछ प्लांट्स ग्रो करें, राइट। नाउ यू हैव टू रिमूव द वैरायटी बी प्लांट फ्रॉम योर फील्ड, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वैरायटी ए का ही सीड चाहिए। तो व्हेन यू रिमूव ऑफ टाइप प्लांट of the same crop, that is known as rogging. Clear? Okay, Aman, crop stand establishment is basically the plant population that you get after the successful seed germination. ठीक है, आपने सीड सो की, आपने सीड रेट मेंटेन किया, यू हैव फॉलोड एनी पर्टिकुलर सीड सोइंग मेथड, प्लांट ज्योमेट्री मेंटेन किया, वट एवर। उसके बाद एग्जैक्टली आपके कितने प्लांट्स ग्रो करें, क्योंकि अगर आपने 100 सीड सो किए फील्ड में, जरूरी नहीं कि 100 में से 100 जर्मिनेट हुए, राइट। इट कैन बी पॉसिबल दैट आपके सिर्फ और सिर्फ 95 जर्मिनेट हुए। So basically, crop stand establishment means plant population that you have after seed germination or after successful seed germination. ठीक है? UPSC PW, there is no such trick to remember the tag color. ठीक है, but I think it's easy. न्यूक्लियर आपको सिर्फ एक तो आपको फ्लो याद करना है, न्यूक्लियर, ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड। ठीक है, टैग कलर न्यूक्लियर के लिए कोई है नहीं, ब्रीडर के लिए येलो, फाउंडेशन के लिए व्हाइट एंड सर्टिफाइड के लिए ब्लू, राइट। सो दैट्स इट। ओके, यू वेलकम अमन। सो सचिन, no Sachin, then in that case you won't be able to differentiate, right? आप तभी रोगिंग कर सकते हो, you can only pluck out or remove the variety of same crop when you can differentiate. अगर आप differentiate ही नहीं कर पाओगे, same variety है, then there will be no rogging required. Okay? Any other question? ठीक है, कोई और क्वेश्चन है? Yes, Swara, there is an advantage of pinkish geometry
क्विंकस ज्योमेट्री के बाद आप क्या करते हो, आप अपना स्पेस यूटिलाइजेशन कर लेते हो, राइट। मैंने बताया कि आप फिलर प्लांट ग्रो कर रहे हो। फिलर प्लांट ग्रो करते हो बेसिकली आप क्रॉप जैसे कि गुआवा, पपाया, सपोटा, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करते हो। इससे क्या होता है कि ये क्रॉप्स जल्दी फ्रूटिंग देती है, तो फ्रूटिंग देगी, आपका एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम बनेगी, प्लस आपका जो स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा, राइट। सेम क्रॉप डिफरेंट वेराइटी, देन यू हैव टू डू द रोविंग। सचिन, Mayank, till now we don't have any news regarding notification, so you can expect it that notification आपका सितंबर में ही आएगा। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है as such. Anything else? Anybody want to know? Okay. I think I have answered all the queries. I'll just wait for a few seconds and then I'll end the session, and I hope you have enjoyed the session. And if you have any query still, tomorrow also I'll be live. You can ask me tomorrow as well. ठीक है। वॉइस ऑफ स्वरा, देखो खरीफ रबी सीजन क्या है। खरीफ सीजन आप ये लेके चलो, जो रेनी सीजन होता है ना, जैसे कि अभी आपका जून जुलाई में मॉनसून सीजन जब स्टार्ट होता है उसको खरीफ सीजन कहा जाता है, ठीक है। जब यह याद रख लो कि मॉनसून सीजन खरीफ सीजन सेम है, जब आपका मॉनसून ऑनसेट होता है दैट इज योर खरीफ सीजन, एंड रबी सीजन इज बेसिकली विंटर, ठीक है। रबी सीजन कैसे याद रखोगे कि ड्यूरिंग विंटर हमें ठंड लगती है, वी रबर हैंड, राइट। तो रबी सीजन उस तरीके से, अगर याद नहीं हो पा रहा, देयर इज अ कंफ्यूजन, यू कैन रिमेंबर इट लाइक वाइज, ठीक है। तो विंटर आपका रबी सीजन हो गया एंड मॉनसून आपका खरीफ सीजन हो गया, राइट। ओके कार्तिकेय, मोनोकॉट डाइकॉट सीड क्या होता है, ठीक है। हमने सीड का डायग्राम देखा था, राइट। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज सीड, तो ये सीड है। चलो मोनोकॉट एंड डाइकॉट एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने चिक पी का सीड देखा होगा, राइट, इन योर हाउस होल्ड, दैट व्हाइट चना वी ईट, राइट, दैट इज अ चिक पी, राइट, वी हैव दैट सीड, एंड यू हैव अ मेज सीड। मेज इज बेसिकली कॉर्न सीड, जो आप कॉर्न खाते हो, दैट इज द maize seed. Now when you have this chickpea seed or white chana seed, you split it open, it will get divided into two equal halves, right? But that is not the case with the maize seed. It will not get divided into two equal halves. So when the seed is equally getting divided into two halves, that is called dicot seed. When the seed is not divided into two equal halves, that is called monocot seed. So that is the difference between dicot and monocot. Clear? Okay, you're welcome, voice of Swara. Any other question anybody have? ठीक है, any other question? Okay, I think I've answered all the queries. So thank you guys for joining the session. Thank you so much, and thank you so much, voice of Sarah, for your compliment. And anything else anybody want to ask? कोई अगर और doubt है और question है, you can ask me tomorrow also. So that's all for this class. I hope you have enjoyed. Thank you so much. I wish you all the best and keep reading for your exam. कार्तिकेय, नेक्स्ट क्लास हमारा टाइमिंग सेम है, 1:30 to 2:30 टुमारो, राइट। सो आप इस क्लास के स्टार्टिंग में जाके टाइम टेबल देख सकते हो। सो आई हैव गिवन यू द टाइम टेबल।